इमरान भाई, हाँ जी, इट्स वेरी टेम्पटिंग जी, इट वाज टेम्पटिंग व्हेन मोहम्मद भाई पोस्टेड इन द लास्ट सीरीज सितंबर में जब आए थे जी, तब से मुंह में पानी आ रहा था बिकॉज़ चलो, सी फूड इज वेरी आई एम अल्लाह वेरी ताला ने फॉन्ड आज ऑफ आपकी वो भी अरमान पूरी कर दिया। लेकिन आप इतना रुके क्यों? आप एक पहला बोल देते तो हिशाम भाई आपके लिए दुबई से पहले आ जाते थे। तो बेशक इमरान भाई, बट सी फूड यहाँ पर खाने का मजा ही कुछ और मजा ही है कुछ ना? और नहीं, सिर्फ उसके साथ जो हिशाम भाई ने जो अरेंजमेंट किया हुआ है। व्हाट डू यू हैव ऑन योर प्लेट इमरान भाई? हमारी फास्ट भाई, ये फिश है। कौन सी फिश है? अंजल फिश, अंजल फिश, 2 पीस प्रॉन्स के हैं, साइज प्रॉन्स और ये चिकन चिल्ली जी। इमरान भाई जी सर, क्या कहना है हिशाम भाई की हॉस्पिटैलिटी का? भाई मतलब एक ही बात बोल सकते हैं कि मतलब कि इनको बोलते हैं ना कि भाई मेहमानों की जो कदर करते हैं, जो मेहमान नवाजगी जो हिशाम भाई ने जो की है, अल्लाह ताला बहुत खूब बरकत देवे पूरी फैमिली, स्पेशली इनकी वाइफ। मैं बोलूँगा बहुत नेक औरत है, मेरी वाइफ से भी इनकी बात काफ़ी होती है, आज भी हुई है। इनकी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, नीट क्लीन एटमॉस्फेयर, मतलब अंदर आने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप मतलब मैंगलोर में हो, आपको लगेगा कि अब्रॉड कोई कंट्री में हो। यहाँ के रोड्स वगैरह आप देख लो फात भाई, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। इमरान भाई अपना हिशाम भाई ओवरवेल्म्ड, वेरी ओवरवेल्मिंग, वालेकुम अस्सलाम, और वो अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू सो मच फाद भाई, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे फार्म में आएंगे, आप हो, इमरान भाई है, मोहम्मद भाई है, सो वी ट्राइड आवर बेस्ट। Hisham bhai, take us through what we have here. This is like typical Mangalorean food. Yeah, this is fried prawns. Huh? And this is chicken chili. Chicken little chili. bit of fusion with Mangalorean style. Okay. And gobi Manchurian. Okay. And this is kingfish, anjal they call it, but it's actually kingfish. Okay. Okay. And you team it up with a Team it up, this is a Kerala parota. Kerala parota. So basically it's famous dish of Kerala, but it is endorsed everywhere in South India. Okay. And you are a Mangalorean. Typical Originally, yeah, Mangalorean. we are from Mangalore. And you speak the language? No, I don't speak language. My forefathers were from Mangalore. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Fahad bhai, for coming, and thank you for special thanks to Imran bhai to take out his busy schedule some time for us. थैंक यू हिशाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फात भाई, और सबों का, मोहम्मद भाई का। मोहम्मद भाई यहाँ पे बैठे हुए। मोहम्मद भाई के नॉट कंट्रोल, मोहम्मद से नहीं खिलाओगे तो फिर नाराजगी हो जाएगी। तो खिलाऊंगा ना, पता ना। जी यार, हमारी मोहब्बत है यार।
Hisham bhai, thank you for getting us to this beach. What is the beach called? Kapu beach. Kapu beach. Yeah, And- it is in Udupi. Okay. And it is the cleanest beach. Yeah, it's this part of the beach is private beach, so only Uh-huh. people who live here, like we have a farm, so we can use this beach. The public beach is on the other side. वो जहाँ में लाइट हाउस है वहाँ पर. Yes, that's the public part of the beach. इमरान भाई क्या कहना है आपका? फात भाई अल्हम्दुलिल्लाह फात भाई, मैं सच्ची बोलूँ इतना क्लीन बीच कहीं नहीं होगा। आप तो मेरे से ज़्यादा ट्रैवल किए हो, क्या आपने कहीं इतना क्लीन बीच देखा है फात नहीं भाई? नहीं मैंने नहीं. उसके बाद जो पानी में आप देखिए ना, पानी के कलर्स आप देखिए फात भाई, इतना नीट एंड क्लीन बीच शायद ही मैं बताता हूँ कहीं होगा। इतना मेंटेन करके इन लोगों ने रखा हुआ है ना। एक आप पॉलीथीन बैग तो बहुत दूर की बात है, आप एक सिगरेट की और बीड़ी की या वो सब कुछ भी नहीं ले सकते। इतना खास neat and करके clean लास्ट वीडियो आपको देखा था मैंने, तो पता चला इमरान भाई इतने साफ सुथरे इंसान है, तो इनको अच्छी जगह नहीं, अच्छी जगह लेके जाना पड़ा। मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ प्लान करूँगा मेरी फैमिली के साथ दिस इज आने योर के फार्म लिए। इमरान भाई, लाइक जेडी इतना गुड फार्म इज माय peace है फार्म। फात भाई, शोर तो बिल्कुल भी नहीं है, हॉर्न तो कोई यूज़ ही नहीं करता होगा, आवाज़ तो हम लोगों ने सुनी नहीं। जितनी बात हम लोगों ने आज वीडियो में वगैरह की है ना, मैं इतनी समझता हूँ कि पूरे गांव वालों ने की होगी। इतना कोई दिखता ही नहीं है, इतना सन्नाटा, Very peaceful, very बहुत peaceful. आप देखिए ना, आप पूरा कवर करो ना फात भाई, आप नीचे से दिखाओ, आपको कोई चीज़ दिख रही है क्या? अच्छा, सैंड की क्वालिटी भी कुछ अलग ही कलर दिख रहा है, ये प्योर है. बहुत साफ है माशाल्लाह। मोहम्मद भाई से पूछो तो आ चुके पहले भी। मोहम्मद भाई आप तो आ चुके हो यहाँ पर पहले से, हाँ पहले है ना? आप भी बहुत घूम चुके हो. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बीचेस? ये वाला मोहम्मद भाई आप केरला जा चुके हो ना, यस, तो केरला। वो बीच ज़्यादा My hometown is Kerala ना। he'll be biased in favor of Kerala, इमरान भाई. क्लीन है क्या? ये क्लीन है, होम टाउन से नहीं ये होगा, बहुत ज़्यादा। ये उससे ज़्यादा क्लीन है। एक्चुअली इमरान भाई यहाँ पे ना अलाउड ही नहीं है ना, अलाउड ही नहीं है। That's why. आप यहाँ पे कोई भी पत्थर के पास जाकर बैठ सकते हो। मुंबई में जू पे किसी भी पत्थर के पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा पता ही है ना आपको। इमरान भाई सीधा भाग गए। एक्चुअली ये जर्नल है, यानी सेंग खाते हुए लोग मिलते हैं पत्थरों के पीछे। मेरा बोलने का मतलब ये है समझ कि गया. पत्थरों के पीछे सेंग खाते हैं लोग। इमरान भाई गलत वे में चले गए थे। स्पॉट रहता है। हाँ, तो यहाँ पर वो सब अलाउड नहीं है। फैमिली स्पॉट और जो गांव के लोग हैं सिर्फ वही लोगों को अलाउड है। Away from pollution, Yes. away from public, away from tourism. उसमें एक जो नदिया बनी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। देखिए आप, वो छोटा सी घर बना हुआ है किसी का। मेरा दोस्त था, जी। उसके फार्म खोजने के लिए कभी देखे ना, ये देखे ना farm, एक वहाँ पे बना हुआ है, देखिए। मतलब अंदर 2-3 छोटे-छोटे घर है, बहुत सुकून, बहुत सुकून। बहुत खूबसूरत, एक सुकून मिला यहाँ पर आके, है ना? Yes. Was not expecting so clean a beach. Yes, yes. Very impressive, very impressive. खालिद भाई को सबसे ज्यादा जल्दी रहती है, क्यों खालिद भाई? चलो जाने का